आपको पढ़ाऊंगी नाउन। और नाउन जो होता है वो कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को आप कह सकते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग है वो नाउन कहलाएगा। हमारे पास ये दोनों पेजेस में नाउन की एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से ये हॉर्स है, मैन है, हट है, हमारे पास ये कार्ट है, डिफरेंट थिंग्स हैं। तो पर्सन, मैन इज अ पर्सन, मैन नाउन है। प्लेस, हट इज अ प्लेस, हट नाउन है। इनफैक्ट गार्डन, गार्डन इज ऑल्सो अ नाउन, ओके। देन वी हैव एनिमल, हॉर्स इज एन एनिमल, सो ये क्या होगा, नाउन। देन थिंग, we have a cart, cart is a thing, so this is noun. Again here we have boy and girl, so ये होगा persons में, persons में क्या आएगा, boy and girl. Then we have places, school and hospital, school and hospital, these are nouns. Then we have animals, elephant and duck, so elephant and duck ये कौन है, ये है noun. Then we have things, books and bag, bag and books, these are noun because these are things. So anything that is person, place, animal or a thing, it is noun, okay. ये noun कहलाता है। Anything that is person, place, animal or thing, these things are noun. तो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि नाउन बेसिकली होता क्या है। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे हम इजीली देख सकते हैं कि नाउन क्या है और क्या नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर किड्स, बाय बाय। सो वी हैव डिफरेंट शेप। दिस इज rectangle, yellow rectangle. Then we have green square. Very good. Green colors. Yes. Okay. Then we have, which color is this? Blue. Blue triangle. Wow. Shapes. Yes. Then we have yellow. Yellow cycle. Yes. Okay. Now we have Blue rectangle. yes. Okay. Now tell me, which color is this? Yellow. And shape is square. This is Red color. yes, rectangle. Then Blue square. blue square. Yes. Then we have Red square. Yes. Then we have green rectangle. yes. Then we have green Green circle. Very good. Then we have Red triangle. yes. We have green. Oh, we have red circle. Red circle. Okay. Then we have Yellow triangle. Green. No. Green triangle. This is blue circle. Blue circle.